there are two types of thinking processes. I always like to go to metacognition level. You think about how you think first. Sometimes when you read a question, you get to remember some facts quickly. यार ये war, ये person, ये event, ये year, ये संगठन, ये act, ये issue. So you have, let us say, data points. Like the moment you look at the question, आपको कुछ facts याद आ जाते हैं उसके आसपास के इर्द गिर्द के. Then what do? Let me frame a question out of the facts I remember. So you try to fit a curve. You know curve fitting. बन गया मेरा curve is my answer. This is one way. Sometimes you do the reverse. I know I want to argue this way. Let me scout for facts in my mind. इस आर्ग्यूमेंट के लिए फैक्ट ये है, इसके लिए ये फैक्ट है, इसके लिए ये फैक्ट है. So you go from data to structure, or you may go from structure to data. Both approaches are fine, and you cannot prefer one or other because paper में इतने questions होंगे. For some questions you will have structure first in mind, and you need facts to support the structure, data to support the structure. And for some questions you have data in mind, you need to create a structure out of that data. अब दोनों processes के अपने अपने फायदे नुकसान हैं. Both of them have their own pros and cons. For example, if I start to go from structure to data, I may say for this question, okay, clarify how 18th century India was beset with the specter of fragmented polity. Beset with the specter का मतलब क्या होता है? भूत. मतलब इंडिया का नुकसान हो रहा था. अब मतलब it is not a good thing to be politically fragmented. Had we been united, we would have had better governance, less warfares, more law and order, better economy, more prosperity. Because the states are fighting with each other, constant wars, constant battle, constant खून खराबा, instability, law and order, नुकसान हो गया. कौन सा नुकसान हो गया? Political, economic, social, cultural. These are ठीक है. What was the implication of political fragmentation? Politically, you are divided. Economically, battles and wars. You have, for example, decline of the port of Surat. You have old cities which were great. Delhi, Agra got ruined. We have agriculture में. You don't have the Akbar ke system of Zapti. What we have now is just land revenue farming. So people are looting them and exploiting peasants, etc. Economic के दो तीन argument बना लिए. You go to social also. We have old elites are now declining. मीर तकी मीर कहता है, दिल्ली वो दिल्ली नहीं रही. The painters and musicians from Delhi, Agra have migrated away to the small petty courts in Hill Rajas or in the case of Rajputana or Madhya Pradesh. क्योंकि उनको पैसे देने के लिए दिल्ली के पास पैसे ही नहीं थे. That is why you have the regional painting styles. That is why you have घराना system in हिंदुस्तानी म्यूजिक में घराना परंपरा है. जयपुर घराना, रामपुर घराना, अतरौली घराना, मैहर घराना, किराना घराना. कहाँ से आते? ये कभी थे अकबर के जमाने में? नहीं थे. All these gharanas emerged due to migration of artists when Mughals started to decline in the 18th century. So we have the cultural aspects also. Persian declined, that's why we have Mughal culture पूरा Persian था. It was not Urdu. अकबर को उर्दू नहीं आती थी. You may get that impression from Mughal Azam और जोधा अकबर, वो गलत है. Akbar never spoke Urdu. He did not perhaps understand Urdu. उसको फारसी आती थी और शायद तुर्की आती हो. मुगलों ने जब तक वो ताकतवर थे उर्दू की इज्जत नहीं करी. When Mughals became weak, then Urdu could rise. उर्दू सामान्य जनता की भाषा थी. Anyway, so मेरा point अगर ये हो गए points. So ultimately what we are seeing, because of political fragmentation, the 18th century was dark age. Was it a dark age? Not exactly. We may be politically fragmented, but economically we were doing good. Because अगर नहीं करते तो सारी यूरोपियन कंपनी यहाँ पे क्या करने आ रही थी? All European companies are coming to India, bringing silver and gold and buying Indian commodities. If Delhi is declining, Murshidabad is coming up.
कलकत्ता इज कमिंग अप, बॉम्बे कमिंग अप। तो कुछ शहर पुराने जा रहे, कुछ नए तो आ रहे हैं। इनमें अवध, लखनऊ है, हैदराबाद है, ऑल दिस सिटीज स्टार्टेड टू इमर्ज इन 16 17, इन 18 दे आर इन देयर प्राइम। सोशली ठीक है, पुराने जमींदार आर गेटिंग साइडलाइंड, पुराने एलिट्स आर गेटिंग साइडलाइंड, नए लोग ऊपर आ रहे हैं, इनमें हिम्मत है, मेरिट है। हैदर क्यों ऊपर आ पाया? मौका मिला। होलकर कौन थे? चरवाहे थे, भेड़ बकरी चराता था आदमी, अब वो उनका पूरा ग्वालियर का उनका बन गया। So all the people who had merit but would have otherwise not gotten chance could rise. कुछ याद नहीं किया, मैं कहानी बता रहा हूं मैं आपको ये। Then you go to culture also. ठीक है, दिल्ली का, आगरा का कल्चर खत्म हो गया। दिल्ली आगरा भारत देश थोड़ी है। Look at the architecture and poetry in different vernacular languages, in Urdu हो, in Rajasthani, in Bengali. You have emergence of all these things. दूसरा एग्जाम्पल जो आपको याद है, अपने घर का लिख लो। पॉइंट है कि इट वॉज पॉलिटिकली फ्रेगमेंटेड, यस, बट इट वॉज, उसके फायदा भी हुआ, नुकसान भी हुआ। फायदा क्या हुआ? ये सब चीजें नहीं थी, इकोनॉमिकली, सोशली, कल्चरली इट डिड नॉट हैम्पर अस। नुकसान क्या हुआ? इट स्टिल गेव द स्कोप फॉर फॉरेनर्स टू कम एंड कैप्चर इंडिया। दैट इज माय कंक्लूजन। ठीक है, तो मैंने क्या किया यहाँ पे, आई वेंट फॉर स्ट्रक्चर टू डेटा। जो डेटा याद आया लिख दिया, कभी किसी को उर्दू याद आए, किसी को मराठी याद आए, किसी को बंगाली याद आए, गिव एनी लैंग्वेज एज एग्जाम्पल, हु केयर्स, as long as the fact is correct, no problem. ठीक है, so this is one way of approaching. Sometimes you have to go other way around also, कि they may act a question, let us say on 1935 act या 1833 act, तो वहां पे तो आपके पास डेटा ही काम को आएगा। ठीक है, so there some questions go this way, some go that way, based on practice and understanding. Clear?